Good morning. Welcome to CNN News 18. I am Arunima. Big focus this morning, battleground Telangana. If these assembly elections are the semi-final before the 2024 Lok Sabha polls, then Telangana is literally playing the last over of a nail-biter. Will BRS score a hat-trick or the Congress will bowl them out? तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। केसीआर శివయాత్రన తెలంగాణ జైత్ర యాత్రన ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। हमारा पहला कदम सरकार बनने के एकदम बाद जाति जनगणना करने का होगा, कास्ट सर्वे। After weeks of campaigning across 119 constituencies, it's now over to the voters of Telangana. Polls are underway since 7 a.m. this morning. It will continue till 5 p.m. and the visuals on your screen shows how the big newsmakers are already out and about. Asaduddin Owaisi is just walking to his polling booth. G. Kishan Reddy, the BJP man there in Telangana, the union minister, he is voted. K. Kavita, she's also in the dock as far as the liquor scam is concerned. But in Telangana, is it having any effect? All these big newsmakers are out there. It's a high-stake battle for BRS President and State Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, who's eyeing a hat-trick amidst a perceptible wave of anti-incumbency and a tight challenge from the Congress party. The third player in the fray, it seems, is the Bharatiya Janata Party, which is also hopeful of making a dent in several constituencies, particularly in North Telangana and Hyderabad. These are areas where Prime Minister Narendra Modi campaigned extensively with the pitch of making a backward class leader as the Chief Minister if voted to power. Asaduddin Owaisi, the man on your screen, once again, just waiting to cast his vote. He's contesting on 9 seats in Hyderabad. He seems to already be in an understanding with the BRS, but could there be a tight photo finish? And if that happens, what role will the Bharatiya Janata Party and AIMIM really play in these elections? Like we have been calling this, it's a big semi-final before the mega 2024 battles. There are 119 seats up for grabs. But what are the key factors here? First and foremost, will KCR beat anti-incumbency? It's a three-cornered fight in the state. Prime Minister Modi's popularity is what the Bharatiya Janata Party is depending on. It's a welfare scheme war, welfare politics that has broken out between the Congress and the BRS. The farmer factor in 75 rural seats. Farmers are the key factors. How will they vote? Will they go in favor of Congress? Is there vote, is there a wave there? Or will AIMIM play spoil sport? So these are the key factors that really encompasses the Telangana vote today that is happening. My colleagues are keeping an eye on the ground. 7 a.m. onwards, the big leaders and the voters have started queuing up. We are expecting the numbers from Election Commission also as to how the last 2 hours has really gone. Swastika Das, in fact, is keeping an eye at the Nandinagar seat in Banjara Hills. Payal is at the St. Fair School where Owaisi has gone in. Swastika, to you first. The last hour and a half or 2 hours since voting began this morning. Anything that you are hearing from the ground? How is it going? How are the leaders analyzing the numbers?
Well, it's a nail-biting contest definitely, because as far as the BRS camp is concerned, they're very much worried about how well Congress is going to perform. Likewise, for the Congress, in fact, which had won just 19 seats in the 2018 elections, for them, it's a giant leap for them to cross the halfway mark, which in Telangana is 60. In fact, right now we are still waiting for BRS working president K.T. Rama Rao to come to this particular booth and cast his vote. But as far as the BRS's camp is concerned, the main factor here is anti-incumbency. KCR is fighting for a third term, but what he faces on the ground is voter fatigue and also a sense of a possibility of the Congress, in fact, making a dent in his prospects as far as the minority voters are concerned. I particularly highlight this since you mentioned that inside, as far as Hyderabad is concerned, minorities have voted for Asaduddin Owaisi, in fact the AIMIM, but outside of Telangana, that's going to be an interesting thing to watch out for. 2014-2018, minorities voted in mass for the BRS, but this time around with its 6 guarantees, and remember, minority-specific declaration that the Congress has come up with, it's going to be a tough fight as far as minority voters are concerned. Right. Swastika, do hold on. You were talking about AIMIM. Asaduddin Owaisi has voted. He's already, speaking to the media there. Let's see if he makes a statement or an appeal. He is surrounded by the media cameras there. Let's dip in. गजब आदमी हो तो पीछे चलो ना, कैमरा लेके आगे क्यों अच्छा आराम से मैं वोट डालो, क्या काम कर रहे हो तुम नहीं है मीडिया के। बात करें सर, आपकी सर वोट डाल दिया आपने। एक मिनट आराम से मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा 1 घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर? नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने, अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन
पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट